चलो ready Ansh. Hi Emin, how are you? Fine, well and good. So today we are going to start. क्या करने वाले हम लोग? We're going to have starting a new chapter, Introduction to Euclid's Geometry. Revision करने वाले हैं. ठीक है? Chapter number 5 का. So what are Euclid's axioms? Euclid's axioms are universal truth or assumptions that considered to be true without proofs. They are already proved. No proof is needed. They are the universal truth. They are the universal truth. We do not need to prove them. For example, things which are equal to the same thing are equal to one another. Whole is greater than the part. Clear? So Euclid axioms are universal truth. Now what are postulates? Postulates are the properties which are assumed to be true and, and are specific to a geometry. What are axioms? Axioms are universal truth that needs not any proof. Postulates are assumed to be true. उसको हम सही मानते हैं and are specific to certain geometry. Now let us see Euclid's axioms. Things which are equal to the same thing are equal to one another. If equals are added to equals, wholes are equal. If equals are subtracted from equals, then the remainders are equal. Things which are coincide with one another are equal to one another. Whole is greater than the part. Whole is greater than the part. Things which are double of the same thing are equal to one another. And the last one, things which are half of the same thing are equal to one another. It is clear to each and everyone. How many axioms are there? Total 7 axioms are there. How many axioms are there? Total 7. Yes, you have to learn this axioms. You have to learn. Okay, you have to learn all the axioms. Clear? Anybody is having any doubt? So एक बार फिर से देख लो. What are the axioms? These are the 7 axioms. It is clear to each and everyone what are axioms. Now, postulate number 1. What is postulate number 1? A straight line may be drawn from one point to another point. For example, these are the points A and point B. A straight line can be drawn. Connection from point A to point B. How many straight lines we can have? Only one straight line we can have. Yes or no? Clear? So what is postulate number 1? A straight line can be drawn from one point to another point. Clear? So whenever the two distinct points are given, there is only one straight line. Write down this in your copy. Write down this in your copy. Clear? Given two distinct points, there is always a straight line connects between them. Clear? Postulate number 1 is clear to all? Chalo. Moving on to postulate number 2. A terminated line can be produced indefinitely. For example, this is a terminated line. This can be produced either on this side, either on this side. So a terminated line can be produced indefinitely on both the sides. Clear? On both sides it can be produced. Is it clear to each and everyone? Say yes or no. Clear है? Postulate number 2. Now, postulate number 3. A
circle can be drawn with any center and any radius. See, this is a circle. A circle can be drawn with with any center and any radius. ठीक है? Clear? Clear? बोलो yes or no? Now postulate number 4. A right all right angles are equal to one another. कैसे? देखो ध्यान से. Right angle of a square, right angle of triangle, right angle of rectangle are equal. All right angles are equal to one another. Clear? Clear? Yes or no? So what are the postulates? Read all the postulates. A straight line can be drawn from any point to any point. A terminated line can be produced indefinitely. A circle can be drawn with any center and any radius. All right angles are equal to one another. Clear? कोई doubt है? Each and everything is clear. How many axioms are there? There are 7 axioms and 5 postulates. Clear? Chalo. For Euclid fifth postulate, let us see one video. We have studied in. Now, postulate is clear to each and everyone. Now we're going to study what is the meaning of Euclid's fifth postulate. If a straight line, if a straight line is falling on two straight lines, for example, this is a straight line, this is a straight line. Straight line है, angle की बात नहीं हो रही, straight line है. If a straight line is falling on two straight lines, then the interior angles on the same side, ये वाले, these are the interior angles on the same side, taken together will be less than the sum of two right angles. हमें पता है इसका sum कैसा होता है 180 डिग्री. कब होता है? When this and this lines are parallel. But यहाँ पे parallel नहीं बोला है. They are not parallel. They are just straight lines. So their sum will be less than two right angles when they are taken together. And when these lines are produced indefinitely, इसको भी बढ़ाएंगे आगे, they will going to meet. कहीं ना कहीं वो आगे जाके जुड़ेगी. तो what is the condition or what is the summary? The sum of angle A and angle B is less than two right angles or less than 180 degree. It means angle A plus angle B is less than 180 degree. This is angle A and this is angle B. Clear? Clear to all? Okay. So what will going to happen if this are going to produced? They will going to meet at some point, and the sum of A plus B will be less than 180 degree. Clear? Okay. Now, what is Playfair axiom? What is Playfair axiom? For every line G, this is the line G. For every line G and a point P which is not lying on G, मतलब एक line G है और एक point है P जो G पे नहीं आता है.
there exists a line M passing through P and parallel to M. So what is the meaning of this? देखो, एक लाइन G है, ठीक है, और एक पॉइंट P है विच इज नॉट ऑन लाइन G, जो लाइन G पे नहीं है। एक लाइन M है पासिंग थ्रू P, जो P से पास हो रही है, तो क्या होगी? दिस लाइन विल बी पैरेलल टू G। तो लाइन क्या होगी? इसके पैरेलल होगी, ठीक है, एंड पैरेलल टू G। तो लाइन इसके, जो लाइन पी से पास करेगी वो उसके पैरेलल भी होनी चाहिए जी के, ठीक है। दैट इज नोन एज प्ले फेयर एक्सियोम। एंड व्हाट इज द नीड ऑफ दिस, देखते हैं अपन आगे। अब देखो, अब तुम बोलोगे सर, फॉर एग्जांपल एक लाइन जी है, एक पॉइंट पी है, तो लाइन तो कहीं से भी पास हो सकती है, एम यहाँ से यहाँ से यहाँ से। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी पास थ्रू पॉइंट पी। देखो ये वाले केस में पॉइंट पी है जो लाइन जी पे नहीं है, द पॉइंट पी इज नॉट ऑन लाइन जी, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू पी, बट देयर इज ओनली वन लाइन विच इज पैरेलल टू जी। सिर्फ एक ही लाइन होगी जो जी के पैरेलल होगी। देयर इज ओनली वन लाइन विच passes थ्रू पॉइंट पी एंड इज पैरेलल टू लाइन जी। इट इज क्लियर? इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? से यस और नो? क्लियर? निष्ठा, हरलिन, एमन, अश्विन, मथुवदिनी, अंश, क्लियर है सबको? देयर एग्जिस्ट ओनली वन लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन जी, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी पास थ्रू पॉइंट पी, बट देयर एग्जिस्ट ओनली वन लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन जी। नाउ अनदर थिंग, other equivalent version, the two distinct lines cannot be parallel to the same line. For example, line L and line M are intersecting line and G is another line. See, this is line L, ऐसी जा रही है, line M ऐसी जा रही है, they are intersecting at point P, and there is existing another line G. Line L is parallel to G, therefore line M and G are not parallel. कैसे सर, बताओ फिर से, हमको समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन एम है, ये पॉइंट पी है, दिस इज लाइन एम। लाइन एल ऐसे पास हो रही है, दिस इज लाइन एल, क्लियर। एक लाइन जी है, एक लाइन जी है, या यहाँ पे बना लो जी, काम करो, ठीक है, जी यहाँ पे बना लो। सो बाय फिगर आई कैन से दैट एम इज पैरेलल टू जी। एम, ये लाइन एम है, एम है, ये पैरेलल है जी के, ठीक है। यहाँ पे नाम दूसरा दिया था, मैंने नाम दूसरा लिया। एम पैरेलल है जी के, बट एल पैरेलल नहीं है जी के। एल देखो ऐसी जा रही क्रॉस होते हुए, एल इज नॉट पैरेलल टू जी। ये वाले फिगर में देखो, ये वाले फिगर में, ये वाले फिगर में एल इज पैरेलल टू लाइन जी, एल इज पैरेलल टू लाइन जी, बट एम इज नॉट पैरेलल टू लाइन जी। क्लियर? क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? So quick summary what we have studied. Postulates कितने होते हैं? 5 postulates. A straight line may be drawn from one point to another point. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक straight line. A terminated line can be produced indefinitely from both the sides. A circle can be drawn with any center and any radius. All right angles are equal to one another. If a straight line falling on a straight line, then the sum of two right angles must be less than 180 degree, and the lines will going to meet. Okay. Now, question number 1. A, B, C are 3 points on a line. B lies between A and C. Prove that AB plus BC equals to AC. We have to prove AB plus BC equals to AC. देखो आप कैसे करेंगे, everybody on the screen. There is a segment AB, एक लाइन है AB, एक लाइन है BC, ठीक है। AB plus BC is equal to AC. कैसे प्रूफ करेंगे? AC coincides with AB and AC. फॉर एग्जाम्पल मैंने लाइन AB बनाई ऐसी, उसके साइड में BC भी रख दी ऐसी, कनेक्ट करते हुए, जोड़ते हुए। आई हैव जस्ट पुट बोथ द लाइंस कनेक्टेड। सो आई कैन से दैट थिंग्स व्हिच coincide with each other are equal to one another. अब एक और एक लाइन है AC, पूरी की पूरी एक लाइन है ऐसी, पूरी की पूरी लाइन क्या हुई? AC. So I can say that things which coincide, एक के ऊपर एक क्या हो गई है? Coincide हो गई. So things which coincide with one another are equal to one another. It is clear to each and everyone. Things which coincide with
each other are equal to one another. Clear है? Say yes or no. Anybody is having any doubt? Prove that. Question number 2. Prove that equilateral triangle can be constructed on a given line segment. For example, equilateral triangle is a triangle in which all sides are equal. सारी की सारी sides और सारे के सारे angles equal होते हैं equilateral triangle में. So let us see how to do this. Draw a line AB, let's say 5 centimeter. एक line AB draw करी. Step number 2. A से arc लिया of length AB, point B से रख के एक arc काटा. Then step number 3, again point A से रख के arc काटा. They will going to intersect at point this. Join like this. We are getting triangle ABC. कैसे किया सर फिर से बताओ. We are not getting. For example, this is line AB. B पे by putting the divider draw an arc of same length AB. A पे रख के B से arc काटा. They will going to intersect at point C. Join AC and BC. You will going to get equilateral triangle. Clear? Clear to each and everyone? ठीक है. So equilateral triangle. अब प्रूफ दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड. तो क्या है प्रूफ इसका. ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी. इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आई कैन सी दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी. मैं बोल सकता हूँ. ठीक है. Things which are equal to the same thing are equal to one another. Therefore, triangle ABC is an equilateral triangle. Clear? Anybody is having any doubt? So, who is the father? Euclid is the father of geometry. Axioms and postulates दोनों को मिला के क्या बनती है? Theorems. Theorems is a combination of Euclid's postulates and Euclid's axioms. The statements, what are theorems? The statements which need to be proved using axioms and postulates are known as theorems. Euclid ने कितनी theorems बताई थी? 465 theorems he has derived. So, summary: properties that are not need to be proved, that are considered as universal truth, are known as axioms. The properties which are universal truth specified to a geometry are known as postulate. And what are theorems that need to be proved by using axioms, postulates, और जिसका कोई एक लॉजिकल रीजन निकलता है, that is known as theorems. Summary, quick summary देखो फटाफट. This is Euclid's postulate. 1 2 3 4 5. Summary number 2, प्ले फेयर एक्सियोम्स किसका इक्विवेलेंट वर्जन है? यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट का इक्विवेलेंट वर्जन है प्ले फेयर एक्सियोम. क्या बताया था? फॉर एवरी लाइन जी अ पॉइंट पी नॉट पासिंग नॉट lying on G, there exists a unique line that is M parallel to G. ये वाली एक्सियोम थी, ये वाला. क्या मतलब सर? भैया जो पॉइंट P है G पे नहीं लाइन कर रहा है, एक लाइन पास करेगी तो एक ही लाइन होगी दैट विल पैरेलल टू G. अनदर थ्योरम ये वाली पढ़ी थी हमने, लाइन L इज पैरेलल टू G एंड M इज नॉट पैरेलल टू G. ठीक है. ये अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं एक्सियोम्स पोस्टुलेट्स थ्योरम्स. क्लियर? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट?